भी ध्यान से देखो, हम फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। Welcome to the session on Computer Fundamentals. Before we start this course, let us first understand what is a computer. A computer is an electronic data processing device which accepts and stores data input, processes the data input, and generates the output in a required format. A computer has moved through various stages of development and improvement. These stages are referred to as generations of computer. We will learn about them later in this session. By the end of this session, you would be able to learn the following: generations of a computer, its applications, benefits of a computer, components of a computer, key principle of computer and definitions. Before we study about computers, it is necessary to know the history of computers as well. The computer was first introduced only with the purpose of calculating and helping humans with that. There had been some major development in the field of computers, and these phases of growth are said to be as generations of computer. The first generation computers, these computers used valves that led computers to be huge and expensive. Then came the second generation computers. These computers replaced valves with the transistors that led computers to be smaller in size and less expensive than the first generation computers. After this, came the third generation computers. In this generation, thousands of transistors were placed in a single silicon chip, known as integrated circuits, X. Apart from these generations, there are other computer systems that are categorized based on the volume and the complexity of calculations. We can see computers are being used in our day-to-day lives personally and for other purposes like airline or railway tickets reservations, medical diagnosis, or even at the grocery stores. The computers that we use at homes for any personal work like creating presentations are known as personal computers, PCs. These computers are also used on billing counters in restaurants or grocery shops. It is the most popular form of computers in use these days. Similarly, the computers that you see in the reservation counters of any ticket reservation station are mini computers and mainframe computers. These computers can work on large-scale data processing for multiple users simultaneously. Some computers are used in such applications that require very complex scientific calculations. These computers are categorized as supercomputers. For example, the computers that help analyzing the weather forecast. Some of the fields that are known for computers usage are business organizations, banks and insurance companies, education sectors, healthcare, military, communication. Now, we know that computers are important for almost all aspects of our life in today's world. Have you ever wondered why? Because a computer system provides three basic benefits over a manual system: speed, accuracy, and diligence. Speed computers works at a very high speed and are much faster than humans. An average computer working is equivalent to 1 million mathematicians working 24 hours of a day. Accuracy computers do not make errors. Most mistakes are caused by human faults. Diligence computers do not get tired or bored. The repetitive work does not affect on computers' efficiency. Now let us see what are the main parts of a computer system. A computer is comprised of a monitor, keyboard, system unit, printer, mouse and a pair of speakers. Monitor looks like a T.V screen and is also known as Visual Display Unit, VDU. Keyboard looks like a typewriter. There are keys for numeric and numeric characters along with special symbols and function keys. System unit, the box-like structure that has all necessary components to run the system, is known as a system unit. Printer is a device that helps printing the results of any operation.
Mouse, the small device connected to the system through a cord that looks like a tail, is called a mouse. Mouse moves on a ball and helps in moving the cursor on the screen. Speakers are used to play sound applications on the computer. A microphone is used to record sound in the computer. All of these components help in the processing of data and information. You must be wondering, how does a computer work? The computer works on a basic principle of input, process, output. Let's see a computer calculator to understand this principle. The numbers that you need to calculate are considered to be as input. The arithmetic calculation performed by the computer is the process. And the result is the output. The input process output is known as IPO cycle. So now, let us understand what is a data. Raw facts and figures are known as data. It is represented with the help of characters such as alphabets, AZ, digits, 0, 9, or special characters, plus, slash, equals, etc. And the processed data on which decisions and actions are made is known as information. To feed the data in the computer, we use input devices such as mouse, keyboard, a microphone. Similarly, the information is displayed to the users with the help of output devices such as monitor or visual display unit, VDU, speakers, or scanners. The system unit is comprised of many components that make the computer work. The two very important components are CPU, motherboard, Central Processing Unit, CPU, which is also known as the brain of the computer, helps in processing data, storing data, and retrieving the information. The motherboard has standard circuitry and extra set of expansion slots that allows you to connect other peripherals. The input and output devices attached to the system unit are known as peripheral devices. Have you ever thought, where does this data stored? The data is stored in the storage devices for processing as well as future references. There are two types of storage devices: primary, secondary. The primary storage device for a computer is further divided into two subcategories: RAM, which means random access memory, ROM, which means read-only memory. The secondary storage devices in a computer are compact disk, USB drive, hard disk, memory data card. It is essential to summarize what we have learned. Following are the key points to be remembered in this session. A computer is an electronic data processing device, which accepts and stores data input, processes the data input, and generates the output in a required format. Following are the generations of the computer. First generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation. Other categories of computers: personal computers, mini computers, mainframe computers, supercomputers. A computer system provides three basic benefits over a manual system: speed, accuracy, diligence. Major components of a computer: monitor, keyboard, system unit, printer, mouse, and a pair of speakers. A computer works on the basic principle of input, process, output. Data comprise raw facts and figures. Information: it is the processed data on which decisions and actions are made. Following are the input devices: mouse, keyboard, a microphone. Following are output devices: monitor or visual display unit, VDU, speakers, scanners. The system unit has two very important components: CPU, motherboard. There are two types of storage devices: primary, secondary.
अभी समझ में आया सबको क्या है थ्योरी, इसमें क्या क्या बताया गया है, यस सिस्टम मैम। में मैम क्या है। ओके, अफसाना, रुकया का भाई ज्वाइन करने वाला था, क्या हुआ? मैम वो एक फोन है तो कैसा करेंगे करके। मैं वो फोन भी नहीं साथ है। में सीख सकती है ना, एक ही फोन है उन लोग हाँ, का। अच्छा एक ही फोन है। यस मैम। मतलब वो रुक, हाँ तो रुकया के साथ बैठ सकते फिर वो दोनों एक फोन से सीख सकते हैं। यस मैम, वही बोली रुकैया को। हम्म। अच्छा ठीक है, बात करना पड़ेगा। तो वो भी अभी लेफ्ट हो गई, क्या हुआ उसका, नेटवर्क इशू है ये या कुछ और है? किसका मैम? रुकया का। मैम मैं कॉल तो नहीं करी अभी तक। मैं आई थी ना स्टार्टिंग में, अभी आई थी, उसके बाद ठीक अच्छा। है। चलो अब हम अभी दूसरी चीज ये जो थोड़ा देखते हैं, उसके पहले जो अभी तक हमने थ्योरी सीखा है ना, उसका फाइल मैं आपको सेव कर दूँ, ठीक है? ओके मैम। ये पीडीएफ फाइल है, मैं आपने यहाँ पे अटैच कर देती हूँ अपने में। ये तो हमारे ग्रुप में आ गई है, वहाँ से आप निकाल के ठीक लिख सकते हो, ठीक है? अपने नोटबुक में लिखा के ले लो, सब आपको बाद में एग्जाम के लिए यूजफुल हो जाएगा। ओके देन, ये दूसरा थ्योरी जो है, दूसरा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है थ्योरी, सॉफ्टवेयर के ऊपर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इसके पहले भी हमने देखा है। पीसी is incapable of performing any task with the hardware alone। हमने कोई भी टास्क दिया कंप्यूटर को, कुछ भी टास्क दिया मतलब इनपुट दिया, तो उसको विदाउट हार्डवेयर वो परफॉर्म करने को, उसको अकेले को परफॉर्म, मतलब ओनली हार्डवेयर के साथ उसको परफॉर्म करना या फिर प्रोग्राम रन करना, उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता वो, ओनली सॉफ्टवेयर के साथ। पीसी कैपेबल परफॉर्मिंग एनी टास्क विद द हार्डवेयर, और सिर्फ हार्डवेयर के साथ वो कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी जो हमने काम दिया, इनपुट दिया, वो प्रोसेसिंग आउटपुट ये सब पूरा हो नहीं सकता है ओनली हार्डवेयर के साथ। तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है, और इनपुट देने के लिए हमें भी कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ओनली हार्डवेयर कुछ भी काम के नहीं होते, मैंने पहले भी एक बार, अगर मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम है, पूरा सब कुछ है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, सब कुछ है, बट इसमें कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, मैं क्या उसको इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे दूँ, है ना? इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर गूगल क्रोम तो चाहिए, जहाँ से हम इनपुट डाल सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, है ना? तो अगर ऐसा कुछ भी प्रोग्राम मेरे पास नहीं रहेगा, ओनली मेरे पास हार्डवेयर रहेगा, कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो एक कंप्यूटर को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों भी कंपलसरी उतने ही होते हैं। It requires instructions or to function as desired, like data, instruction, also entered by input devices like keyboard, mouse and joystick। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज करके हमें कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हमारे हमारे पास चाहिए होते हैं, है ना?
बाद भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस या फिर इनपुट दे सकते हैं। A set of instruction is called a program. Program किसे कहते हैं? A set of instructions is called a program. A set of program written to achieve a common objective is called software. A set of program जो होता है उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोला जाता है। जैसे वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है सब कुछ जिसपे हम काम करते हैं, जिसको हम रन करते हैं। या फिर टाइपिंग का कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या फिर पेंटिंग का कोई है, या फिर और भी कोई बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, या फिर मिरर टाइपिंग है, टच पेड है ना, ये वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये भी उतने ही जरूरी होते हैं जितने कि हार्डवेयर प्रोग्राम। We can recognize software in two types. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी दो टाइप के होते हैं, उसमें दो टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वो सबसे पहले होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग करते हैं, उसके टू टाइप्स जो है उसके बारे में डीपली हम लोग कल हैं। अभी हमारा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो वो मुझे अपलोड करने के लिए हार्ड हो रहा है, तो जल्दी से अपलोड नहीं हो रहा है ज़्यादा। जितना ज़्यादा वीडियो बड़ा होता है तो उतना